Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. Today in this worksheet 1 of the chapter Dual Nature of Matter and Radiation, हम बहुत important questions discuss करेंगे from the topic photoelectric effect. The first question says, name the phenomena which shows quantum nature of electromagnetic radiation. एक ऐसा phenomena का नाम बताओ जो ये prove करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्वांटम नेचर है. क्वांटम मतलब पार्टिकल जैसा नेचर है, ग्रेनी नेचर है. एंड द आंसर इज photoelectric effect. There can be one more answer, that is Compton effect, about which you will study in your higher classes. Question number 2 says, what is the stopping potential applied to a photocell if the maximum kinetic energy of a photoelectron is 5 electron volt? हमें पता है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी. तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना अप्लाई करना पड़ेगा. वी नो द काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स द स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय द चार्ज, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. E gets cancelled and I get 5 volt. Now this will be a negative value क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाना होता है. सो द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज -5 volt. Question number 3 says the stopping potential in an experiment is 1.5 volt. Basically it's a negative value. Stopping potential हमेशा negative value होती है. What is the maximum kinetic energy of photoelectron emitted? So again we will use this relation. यहाँ पर हमें उल्टा दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, दैट इज 1.5 वोल्ट. सो आई कैन राइट 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन emitted. Question number 4 says two metals A and B have work functions 4 electron volt and 12 electron volt respectively. Which metal has the highest threshold wavelength? दो मेटल्स हैं ए और बी, उनके वर्क फंक्शन हमें दे रखा है. हमसे पूछा है कि किसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होगी. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होगी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी. वी कैन राइट वर्क फंक्शन एज h टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ए के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट ए और बी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट बी. नाउ जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम है. इसका मतलब बी की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम है और ए की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा है. सिंस phi naught is inversely proportional to threshold wavelength, it means A will have more threshold wavelength. So this is my answer. Let's have a look at the next question. A photosensitive surface emits electrons when red light falls on it. Will the surface emit photoelectrons when blue light falls on it? Give reason. एक फोटोसेंसिटिव सरफेस है, उसके ऊपर रेड लाइट फॉल कर रही है तो उसमें हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है. इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एमिटेड. नाउ if the wavelength of red light is lambda, or we can say the frequency is nu r. R represents for red wavelength. तो क्या इसी सरफेस पे अगर मैं ब्लू लाइट डालती हूँ हैविंग वेवलेंथ लैम्डा वी और फ्रीक्वेंसी न्यू वी, तो क्या इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा? सी, अगर इस फोटो सेंसिटिव सरफेस के लिए थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट और रेड वेवलेंथ के साथ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, इट मीन्स न्यू आर इज ग्रेटर देन न्यू नॉट. नाउ हमें पता है जो ब्लू लाइट होती है फिर वायलेट लाइट होती है, लेट मी रिप्रेजेंट इट विद वी ओनली, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेड लाइट से ज्यादा होती है. तो अगेन इन दोनों को कंपेयर करें तो जो ब्लू लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आ रही है. इट मीन्स इस केस में भी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. सो इफ वी कैन सी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद रेड लाइट, we are going to definitely see the photoelectric effect with blue light as well. Now question number 6 says
Work function for sodium is 2.3 electron volt. Does sodium show photoelectric effect for light of wavelength 6800 angstrom? क्वेश्चन में हमें सोडियम का वर्क फंक्शन दे रखा है. हमें बताना है कि 6800 एंगस्ट्रॉम की लाइट के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा. देयर आर टू वेज. सबसे पहले वी कैन राइट phi naught is equal to hc upon lambda naught. Here lambda naught is the threshold wavelength. अगर हम चाहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, then this wavelength should be less than the threshold wavelength. So we can calculate this threshold wavelength first. There is a very simple method of doing this kind of question. We'll write the wavelength here in angstrom. And the value hc is 12400 and I can write it as equal to 2.3. Then from here I can calculate the threshold wavelength in angstrom and that will be equal to 12400 divided by 2.3 and the answer is approximately 5391 angstrom. Now this is the threshold wavelength. जो हमारी लाइट आ रही है 6800 एंगस्ट्रॉम की है. द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ शुड बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द इनकमिंग लाइट फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, सो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट टेक प्लेस. इसका हम एक और तरीके से कर सकते हैं. जो 6800 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की लाइट आ रही है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. By using this relation, again we'll write hc की जगह 12400 and wavelength will be in angstrom and the value in angstrom is 6800. So on solving this, I get the value of my energy in electron volt. And on calculating it, I get the value, the energy of the incoming photon as 1.8 electron volt. लेकिन work function है 2.3 electron volt का. It means the photoelectric effect will not take place. Now you must be wondering from where did I obtain this formula? It's very simple. Here I get energy in joules. अगर मैं h की वैल्यू रखती हूँ 6.626 into 10 to the power minus 34. Speed of light is 3 into 10 to the power 8 and wavelength as it is. Now wavelength को अगर मैं angstrom की terms में लिखती हूँ, I'll need to take 10 to the power minus 10 out. तो अगर 6800 angstrom है, so now here the value of lambda is 6800, not 6800 in 10 to the power minus 10. And here I'll get energy in joule, but I need energy in electron volt. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. So here in order to convert joule into electron volt, I need to divide it with 1.6 into 10 to the power minus 19. On solving this, I get this relation. It is approximate value 12400. यहाँ पर अगर मैं wavelength को angstrom की terms में लिखती हूँ, then I'll get the energy in electron volt. Now question number 7 says, ultraviolet radiations of different frequencies nu1 and nu2 are incident on two photosensitive materials having work functions W1 and W2, where W1 is greater than W2. The kinetic energy of the emitted electrons is same in both the cases. Which one of the following radiations, which one of the two radiations will be of higher frequency and why? Question के according हमारे पास दो different materials हैं, photosensitive materials हैं. एक का वर्क फंक्शन है W1 और दूसरे का वर्क फंक्शन है W2. वर्क फंक्शन W1 वाले मटेरियल पे nu1 फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हुई और वर्क फंक्शन W2 वाले मटेरियल पे nu2 फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हुई. W1 वर्क फंक्शन ऑफ फर्स्ट मटेरियल इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ सेकेंड मटेरियल और इनसे जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ दोनों मटेरियल से, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम थी इलेक्ट्रॉन की. हमें बताना है कौन सी फ्रीक्वेंसी हायर है, nu1 और nu2 and why. First we are going to write Einstein's photoelectric equation for both the materials. H nu1, that is the energy of incident photon, is divided into two ways, W1 plus kinetic energy. Similarly, the energy of the incident photon 2 is divided into
two waves, the work function of second material plus the kinetic energy of emitted photoelectron. Let this be my first equation and let this be my second equation, and I subtract the two. Second equation from the first equation, I will get this. यहाँ पर kinetic energy दोनों इलेक्ट्रॉन की सेम है, so this term goes to 0. Now W1 is greater than W2, so this term will be positive. इसका मतलब राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव होगी, और आई कैन राइट nu1 इज ग्रेटर देन nu2. तो फर्स्ट जो सरफेस पे फ्रीक्वेंसी आ रही है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, उसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, और सेकेंड nu2 इज हैविंग लेसर फ्रीक्वेंसी. क्वेश्चन नंबर 8 says the threshold frequency of a metal is f. When a light of frequency 2f is incident on the metal plate, the maximum velocity of photoelectron is v1. When the frequency of incident radiation is increased to 5f, the maximum velocity of the photoelectrons is v2. Find the ratio v1 is to v2. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट की वैल्यू है f. जब हमने एक लाइट इंसिडेंट करी, लेट इट बी nu1, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 2f थी. Then in that case the maximum velocity of photoelectron is v1. तो उसकी kinetic energy कितनी होगी? Kinetic energy of that photoelectron will be half mass of electron into v1 का square. इसी तरीके से जब हमने एक सेकेंड रेडिएशन डाली जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5f के बराबर, देन उसमें से v2 वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन निकला. इट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की? हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू v2 स्क्वायर. नाउ हम दोनों के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं. एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन दैट इज h इंटू 2f और 2hf इज इक्वल टू वर्क फंक्शन इज h न्यू नॉट और hf प्लस हाफ mass of electron into v1 square, that is the kinetic energy of photoelectron. इसी तरीके से सेकेंड के लिए हम लिख सकते हैं इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वाज 5hf और वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? वर्क फंक्शन इज अगेन hf ओनली प्लस हाफ me इंटू v2 स्क्वायर. तो हम फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं तो वी विल गेट hf इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर, एंड सेकेंड इक्वेशन में 4hf is equal to half m2 v2 square. Let me divide these two. I'll get v1 square upon v2 square is equal to 1 upon 4. So v1 upon v2 is equal to 1 upon 2. This is the ratio of the two velocities. So I hope all these questions are clear to you. Thank you for watching. Have a good day.